Greeting everyone. I welcome you to yet another lecture of circuits and systems. In today's lecture, we'll be going through with two-port networks. In this, we'll be going with the introduction of two-port network and we'll be going with an important topic of interconversion of the parameters. So, students, always remember, failure will never overtake me if my determination towards success is strong enough. So, please keep your hard work going and make sure you will succeed in the examination. So, with this, moving to the topic. So, what is a two-port network? A two-port network is a four-terminal network which is used to interconnect more circuits. So, this network can be termed as two-port network because there are four terminals. This is terminal 1, 2, 3 and 4. And we have two ports. One is the input port, other one is the output port. And this network is nothing but it is an interconnection of RLC as passive component. It can also have active components like op amps and transistors. So this is just a network. So what does this two-port network does? So this two-port network is can act as an interconnection between the two circuits. So you can see we have got four parameters written on the board. For input side, we have V1 and I1. It's about the circuit parameter. Output side, we have V2 and I2. Now, the combination of these four will determine the parameters of two-port network. तो हमारे को कई बार ये होता है कि कितने पैरामीटर्स है हमारे, तो आज हम चेक करते हैं इनके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. तो लेट अस स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं वोल्टेज का कॉम्बिनेशन V1 and V2 combines into one team trying to produce I1 and I2. Obviously V1 और I1 का एक लिंक एस्टेब्लिश होगा. That link is known as Z or impedance parameter. The impedance parameter क्या होता है? See, impedance is nothing but Z is nothing but V by I, my Ohm's law. So if I comes here, it becomes V by I. So that is my impedance parameter. Similarly, let us say I1 and I2 connects together to give me V1 and V2. This becomes admittance parameter. Admittance parameter, Y parameter, which is nothing but Y is equals to 1 by Z. Now, let us take both the things at input, that is we have an input voltage, we have an input current. Similarly, when we are looking towards the network from input side, what we have an output voltage, we have an output current. बट अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो इस करंट की डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए थी, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने लगाया एक माइनस साइन. सो अब हम क्या कर रहे हैं, V1 I1 को ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरफ, तो इसलिए इस ट्रांस को कहा जाता है ट्रांसमिशन पैरामीटर और ABCD पैरामीटर. अब इसी चीज को जब मैं इस तरफ से देखूंगा तो क्या टीम अप बनेगी, V2 और I2 की, और पैरामीटर निकल कर आता है T डैश या इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं A डैश B डैश C डैश D डैश. और डेफिनेटली जब इधर से देखेंगे तो V1 I1 के डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी, तो V1 एंड माइनस I1. नाउ द लास्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर, सी हमने क्या किया, हमने दोनों वोल्टेज ले ली, दोनों करंट ले लिए, इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट. अब हम कह रहे हैं हम इनपुट वोल्टेज दैट इज V1, सॉरी इनपुट वोल्टेज दैट इज V1 और आउटपुट करंट दैट इज I2, यानी इनपुट की वोल्टेज ली, आउटपुट का करंट लिया, तो इट इज व्हाट, इट इज हाइब्रिड. सो हाइब्रिड पैरामीटर, so it becomes H parameter. Output will be input का current and output की voltage. Similarly, input current, output voltage
will give me G parameter. This will produce input voltage and output का current. So how many combinations are possible? 6 combination, यानी 6 combinations are possible. Hence we have 6 parameters: impedance, admittance, transmission inverse, H and G parameter. So let us see all the parameter. Now this is a kind of holy grail for two-port network. This contains almost every possible thing which we need to know about the parameters. So let's start with the impedance parameter. Now impedance parameter is, so we get two equations. V1 is equals to Z11 I1, Z12 I2, V2 is equals to Z21 I1, Z22 I2. So this is a matrix. So if we want to find out Z11, अगर मुझे इस इक्वेशन में Z11 निकालना है तो ऑब्वियसली I2 शुड बी जीरो. अगर I2 को जीरो करना है, देखो अगर मुझे यहाँ पे I2 को जीरो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ओपन सर्किट रखना पड़ेगा. अगर मेरा आउटपुट ओपन सर्किट है तो I2 विल बी जीरो, मेरा इनपुट ओपन सर्किट है तो I1 विल बी जीरो. अगर आउटपुट मेरा शॉर्ट सर्किट है तो यानी V2 इज इक्वल्स टू जीरो. अगर इनपुट मेरा शॉर्ट सर्किट है तो V1 is equals to zero. So this much is clear to you. Open circuit, current zero, short circuit, voltage zero. So now if I want to calculate Z11, I need I2 to be zero. For current to be zero, I want I2 to be zero. So I'll say my output is open circuited. So my output is open circuited. So similarly over here, I want I1 to be zero. My input is open circuit. That is my I1 is equals to zero. Now here again I2 to be zero. Output is open circuited. So I2 is equals to zero. Output is, or rather input is open circuit. Input is open circuit. So I1 is equals to 0. I can calculate. Now if you see all the 4 Z parameters Z11 to Z22 have been calculated by opening the circuit. We can have open circuit at input or open circuit at output. Hence Z parameter or impedance parameter is also known as open circuit parameter. Clear everyone? So now there is one more thing, the condition for symmetry and condition for reciprocity. This will be taken care when we'll be solving the circuits. So moving ahead to Y parameter. Again, in Y parameter, if you see, I want V2 to be 0. So V2 to be 0, that means output is short circuit. Here V1 to be 0, that means input to be short circuited. V1 is here, V2 to be 0, then output is short circuited, that is V2 is equals to 0. Here input is short circuited, V1 is equals to 0. So all the 4 parameters are we are getting after short circuiting the input or output terminals. Hence this is also known as short circuit parameter. Now when we are moving about other parameter, in other parameters कुछ पैरामीटर तो हमारे निकलेंगे कि इनपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा और आउटपुट को ओपन. कुछ में क्या होगा, आउटपुट को शॉर्ट करेंगे और इनपुट को ओपन. सो दिस यू हैव टू सी सिंपल सी बात है, जहां पर वोल्टेज को जीरो करना है शॉर्ट सर्किट, जहां पे करंट को जीरो करना है ओपन सर्किट. सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू एनालाइज एंड कवर अप कि जब यहां पर V1 V2 निकल रहा है, इस इक्वेशन से V1 V2 निकल रही है एक ही वैल्यू, तो I2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे I2 निकालने के लिए मुझे आउटपुट को ओपन सर्किट करना पड़ेगा. सो I2 इज इक्वल टू 0, दैट इज आउटपुट इज ओपन सर्किट. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी वोल्टेज का वोल्टेज के साथ रेशियो होगा तो यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट्स डिवाइडेड बाय वोल्ट्स. वोल्ट्स गेट्स कैंसिल, इट विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी. वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा तो मेरा यूनिट क्या होगा,
My unit would be ohms. करंट और वोल्टेज के रेशियो में मेरा यूनिट क्या बनेगा? मो, दैट इज 1/ओम. और करंट बाय करंट के रेशियो में मेरा क्या बनेगा? Again unitless, ampere and ampere will get cancelled up. Okay, so by this you can get all the things signed up. So just go through it once, take a screenshot, and you'll get all your answers. This is my request, ki do try to make your own notes and write all the things possible over here. Okay, moving ahead. Next important thing is we need to remember how we can convert Z parameter into Y to transmission, inverse transmission, hybrid, and inverse hybrid, that is G parameter. So this is an important topic which is known as interconvergence of the parameter. Now this matrix where numbers are from 1 to 30 shows us that in total we have 30 such convergence. So I can determine Z in terms of Y, T, T dash, H, G, Y in terms of Z, T, T dash, H, Z. So in totality we have 30 convergence. But if we see relation between Z and Y, so Z is equal to, I can write down Y inverse. So if I have to write down Z parameters in terms of Y, I have to take the determinant of Y, just replace the position of these two, keep rest of the matrix as it is, and just add a minus sign. Clear? So what I've done, replace the positions, add the minus sign. So this is Z converted to Y. Now Y is equals to determinant of Z, Z22, Z11, Z12, and Z21, just add a minus sign. Similarly, H to G and G to H is equals to G inverse and G is equals to H inverse. So we have got 4 conversions done. Z to Y, Y to Z, H to G and G to H. Now there is a catch when we are converting T to T dash. So at times in exam they ask to convert T to T dash. So how to do it? Let's write the equation for T. V1 and I1. V1 is equals to A V2 minus B I2. I1 is C V2 minus D I2. Similarly, for T dash, we have V2 and I2. This, okay, I'll just write it below this one. So for T dash parameter, so we have V2 A dash V1 minus B dash I1. I2 is equals to C dash V1 minus D dash I1. So number the equation 1, 2, 3, 4. Okay. Now, if I have to convert T to T dash, so in 1 and 2. So what we have to do? We have to multiply V1 is equals to A V2 minus B I2 I1 C V2 minus D I2. So multiply this V1 with D and multiply this I1 with B and then subtract the quantities. So what do I get? I get
dV1 minus BI1 is equals to AD minus BC V2 minus 0. These two quantities get cancelled. Now write this equation in terms of V2. So V2 is equals to D by, if you'll see it carefully, it is nothing but determinant of T. D by determinant of T into V1 minus B determinant of T into I1. Now, if you can see, if I compare this equation 5 with equation 2, I get A dash is equals to D by delta T and B dash is equals to B by delta T. So this is how I get my two parameters. Now for the other two, I just have to substitute this value of V2, or rather for other two, just you have to multiply this 1 and 2 with C and A. So it would be V1 A V2 minus BI2, this whole multiply by C I1 CV2 minus DI2 multiply by A. So what does this will give you? So on solving, it will give you C dash and D dash. So my D dash would be A by determinant of T and my C dash would be C by determinant of T. I would request you to please solve this and do verify the answer. And even if I've done wrong, please let me know in the comments below. So this is how we have converted. Now we have converted these two also. So T, we have converted T to T dash and T dash to T. So in totality on this, we have converted 6 parameters. Now what about the rest 24? अब 6 तो हो गए. 6 में एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, टी टी डैश का. अच्छा बाई चांस टी डैश को टी में कन्वर्ट करना हो, उसका भी सेम तरीका है. इसको डी डैश से मल्टीप्लाई करो, इसको बी डैश से एक बार, तो यू विल गेट ए और बी. इसको सी से, इसको ए से, यू विल गेट बी और डी. ओके, नाउ मूविंग अहेड to the major convergence. So let us say we want to write t parameter in terms of z parameter. अब हमारे को क्या दिया हुआ है? हमारे पास z पैरामीटर्स है, राइट? इसको इस तरीके से समझो, हमारे पास z पैरामीटर्स है, एक ऐसा सर्किट है जिसका z पैरामीटर मैं बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट? मुझे निकालना है उसका t पैरामीटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आई जस्ट हैव टू राइट डाउन बोथ द इक्वेशंस. लेट अस से फॉर t पैरामीटर v1 and i1, a v2 minus b i2, c v2 minus d i2. This is for t. Now z parameters की क्या होंगी? v1 is equals to z11 i1 plus z12 i2. v2 is equals to z21 i1 plus z22 i2. क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको बनाना है एक छोटा सा मैपिंग टेबल. क्लियर? तो इन इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं 1 2 3 4. So I've written 1, I've written 2, I've written 3, I've written 4. Now what you have to fill in this map is you just have to fill all the circuit variables present. So 1 में कौन कौन से present है? V1, V2, I2. So write down V1, V2,
I2, V1, V2, I2। टू में कौन कौन से प्रेजेंट है? V2, I2, I1। सो I1, V2, I2, I1, V2, I2। ओके। सिमिलरली ये दोनों कॉलम 3 के, ये दोनों 4 के। सो 3 में कौन कौन से हैं? V1, I1, I2, V1, I1, I2। 4 में कौन कौन से हैं? V2, I1, I2, V2, I1, I2। ओके, तो ये टेबल फिल हो गई। अब इस टेबल में आपको कंपेयर करना है एक ऐसा कॉलम जिसके सारे वेरिएबल सेम हो। जैसे कि देखो यहां पर V1 V1 दोनों में है, I1 है लेकिन यहां पर I1 नहीं है, तो ये कॉलम अभी हम नहीं यूज कर सकते। क्लियर? लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ के मैच नहीं कर रहे, तो इसको हम अभी यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ देखते हैं, I1 है, V1 लेकिन यहाँ V1 नहीं है, तो ये भी यूज नहीं हो रहा। V1, यहाँ पर V1 ही नहीं है, तो ये भी यूज नहीं हो रहा। अब आते हैं यहाँ पर, देखो I1, V2, V2, I2, I2। सो ये कॉलम मेरा टिक करता है, दैट इज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4। क्लियर? सो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4। सो नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, लुकिंग एट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, अगर आप देखोगे इसके सारे वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो राइट डाउन इक्वेशन 4 ओवर है। सो इट इज V2 is equals to Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब इक्वेशन 2 को देखो, I1 की इक्वेशन है, put this whole equation in terms of I1। So I1 is equals to V2 minus Z22 I2 divided by Z21 divided by Z21। ये मेरा I1 की इक्वेशन आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखोगे, if I put this equation as again equation 5, comparing 5 with 2, comparing 5 with 2, I get my C is equals to 1 by Z21 and my D is equals to Z22 by Z21। So I've got my C and D parameter. So I've got my C and D parameter. Now अब आपको C और D मिल गया, I1 की इक्वेशन मिल गई। अब आपको निकालना है V1, तो whatever you have used 2 and 4। Now if I put this I1 in terms in equation number 3, so putting 5 in 3, so putting 5 in 3 will yield me V1 to Z11 1 by Z21 V2 minus Z22 by Z21 I2 plus Z22 I2। Now solving for this, we get V1 is equals to Z11 by Z21 V2 minus, I'll take minus as common, Z22 into Z11 minus Z2, this is Z12, sorry, this is Z12. So Z21 into Z12 divided by Z21 I2. So this is what I've got. Now if you'll see, if you compare this 6, if you compare this 6 with this equation 1, you get
A is equals to Z11 by Z21 and B is equals to, this is nothing but determinant of T divided by determinant of Z divided by Z21. I'll just write it in a, my B is nothing but determinant of Z divided by Z21. So what does this convergence say? This convergence says if I have an ABCD parameter, this in terms of Z can be written as A is equals to Z11 by Z21, B is equals to determinant of Z by Z21, C is 1 by Z21 and D is Z22 by Z21. So this is the required interconversion. So this is how we can convert any parameter into any parameter. So just remember to make this table, get the right equation which you have to compare. In this case, we had 2 and 4. So compare 2 and 4. When you are comparing 2 and 4, you just have to get 4 in terms of 2. यहाँ पर हमारे केस में I1 के टर्म्स में लाना था, जैसे I1 के टर्म में लाया तो मेरी C और D निकल गए. जैसे ही मेरे C और D निकल गए तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करी 3 में. I1 की वैल्यू जैसे ही मैंने 3 में पुट करी, मेरे A और B भी निकल गए. इसी तरीके से बाकी की कन्वर्जन्स भी डील की जा सकती है. ऑल 24. क्लियर एवरीवन? और अगर आपको सबको करना है, आप इवन इनिशियल वाली कन्वर्जन्स को भी देखोगे तब भी यही आंसर आएगा. इफ यू डोंट हैव टू रिमेंबर, इफ यू डोंट इवन वांट टू रिमेंबर कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस किस का निकालना है, आप सारी कन्वर्जन्स इससे कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड, नाउ there are few ways to interconnect the networks. See, हमने बोला कि टू पोर्ट नेटवर्क हमें इसलिए चाहिए क्योंकि वो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, राइट? तो नेटवर्क कनेक्शंस के तीन डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं? टू नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, टू नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड द थर्ड फॉर्म इज कैस्केड. कुछ पैरामीटर्स हमारे टू पोर्ट नेटवर्क के इजी हो जाते हैं पैरेलल, सीरीज और कैस्केड में निकालना. क्या होता है कि मान लो तुम्हारे को एक नेटवर्क दिया गया है, तुम्हें बोला गया है कि इस पैरेलल नेटवर्क का लेट अस से Z पैरामीटर निकालो. प्रॉब्लम ये है, Z पैरामीटर निकल तो जाएगा डायरेक्टली, बट इट इज गोइंग टू बी बिट टफ फॉर यू. सो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से Y पैरामीटर निकालते हैं इंडिविजुअली. इस कंबाइंड नेटवर्क का वाई पैरामीटर क्या होगा? YA प्लस YB. दैट मींस अगर नेटवर्क्स मेरे पैरेलली कनेक्टेड हैं तो मेरे Y पैरामीटर्स एड अप हो जाएंगे. जैसे ही मेरे पास कंबाइंड Y आया, मैं उठा के उसको इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं किसी भी और पैरामीटर में. इस केस में Z बोल रहा हूं, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी पैरामीटर. सिमिलरली जब दो नेटवर्क सीरीज में लगे होते हैं मेरे, ठीक है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है ओवरऑल Z पैरामीटर निकालना. वो क्या हो जाता है? ZA प्लस ZB. तो एक बार मेरे पास Z आ गया तो मैंने अभी देखा था, Z को मैं T में कन्वर्ट कर सकता हूं, Z को मैं H G Y किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं. ऐसे ही अगर मेरे दो नेटवर्क कंबाइंड कैस्केड फॉर्म में लगे हुए कि एक का आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रहा है, तो मेरे लिए सबसे आसान हो जाता है T पैरामीटर निकालना, विच इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2. तो जैसे ही मेरा ओवरऑल T आएगा, T को मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं. सो दिस थिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. ये कई बार एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नेटवर्क बन रहा होता है कि वो कैस्केड के फॉर्म में या पैरेलल की फॉर्म में या फिर सीरीज के फॉर्म में कनेक्टेड होता है. तो उस केस में हम फटाफट से ये वाले पैरामीटर्स निकालते हैं, जो भी करस्पॉन्डिंग पैरामीटर बनता है, और ओवरऑल पैरामीटर हम निकाल पाते हैं. So with this, let's end this slide. So always remember, little by little, a little becomes a lot. छोटे छोटे एफर्ट्स मारते रहिए, सारे एफर्ट्स कंबाइन होंगे तो एक बड़ा एफर्ट आपके सामने होगा. So always remember to like, share and subscribe the channel. So this will help your channel to grow and make this channel reachable to every possible student. So with this,
I'll thank you all for this lecture. We'll see you soon in the other lecture. Thank you, my dear students, and all the best.